Namaskar, all of you. I hope my voice is clear, right? So, this class is going on simultaneously both through the app and also through Google Meet. Okay. तो जो माने Google Meet रे join करी नांती तो आपण माने आपणकर Gmail ID टा मते पठे देबे after the class मते WhatsApp कर देबे. So I'll add you there so that you can directly have a discussion. Actually, app रे कौन जिनसटा की ସେଥିରେ voice ର discussion ଟା ଏତେ seamless ନୁହଁ. Okay, you have to raise your hand and you have to accept and all. So better to join in Google Meet. app ର ଏତିକି ଲାଭ ହଉଛି କି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ତାକୁ class ଟା ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, so half an hour after the class ends, it is automatically uploaded through your app. सेठी आपण content under रे live classes under रे जिबे तो सेठी आपनको मिल जिवो. ओके, सेटा द्वारा प्लस जा कंटेंट करिका हमें ओके discuss ସେଥିରେ କରିପାରିବା, right? So anyway, already काली class to continue करिबारे. So ମୁଁ mirror interview ବିଷୟରେ କହିଥିଲି କାଲି class ରେ. I hope all of you have started the mirror interview. Okay, mirror interview ଟା ଆପଣ ତାକୁ start କରି ସାରିଛନ୍ତି, right? So today we will discuss some important questions. Current affairs to be situational questions be because आपनकर already schedule आसी गलानी, so we don't have much time. ठीक अछि तेनु आज जो माने आसी कि मॉक्स देई चंती. ओके, ओवरऑल जहा आज रो मॉक्स रु मु जानि परबी कि some of you are very well prepared, especially जो माने already service रे अछंती. ओके, group B services रे अछंती. You people are well prepared. जहा personal feedback मु आपन को देई छी, just go through that. आउ जो माने काली परदिन कि जेबे आपण once you are well prepared for the interview, then you can schedule your time. Okay, जोटा 12 रु 5 टा भितर every day हमर रहउची 12 रु 5 टा. You can schedule your time and accordingly you can okay come for the interview. Okay, so आज हमें किछटा important जिंस डिस्कस करिबा. Lot of people have asked कि मु केते मासर करंट अफेयर्स पढिबी. सी बेसिकली इंटरव्यू लेवल रे आपण ने मेंस ପାଇଁ जेमति करंट अफेयर्स पढुचंदी ना, एठी सेही टाइप रो करंट अफेयर्स आपण को पढिबार नै. एठी बेसिकली ओपिनियन बेस्ड और जोडा बर्निंग टॉपिक्स रहउची तारी ऊपर बेसिकली कंसंट्रेशन थाए. ओके, सो आपण को सेही टाइप रो टॉपिक्स ऊपर किछि ओपिनियन फॉर्म करिवार अछि. ऑब्वियसली दैट ओपिनियन विल बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स. ठीक अछि तो तेनु आज हम 4-5 टा सेंति प्लस आपनकर जोडा सीआईएफ टा बायोडाटा टा. ओके, तो सेटा को भलरे आपण प्रिपेयर करिवार अछि इंक्लूडिंग योर होम डिस्ट्रिक्ट. आपण को होम डिस्ट्रिक्ट रो इश्यूज कोन रहउची एक्सेट्रा से गुडा भी इंपोर्टेंट जिंस ता भीतर रहउची. Okay, so let us start then. So every day till your interview starts, or even after that, we will be having this theory class online. Okay, a time पे आपको 9:30 10 around हमें तक रखियो. So 1 hour most important topics जोड़ा that we will discuss. So let us then come to the topics which we have to discuss today. तो प्रथमे हमें national issue जोड़ा important national issue जहाँ ऊपर गोटे opinion based okay question हमारा आसी परिबो, right? तो first we come to it international to start करिबा. That is the riots which are going on now in many of the European countries due to different reasons. ठीक अछि तो ता ऊपर जदी क्वेश्चन आसी परिबो ओके कि जदी आपण को से कामटा दिया हैला ओके कि फ्रांस रे पे रॉइट्स होच कि बेल्जियम रे हिची कि आउ को जगह रे हिची कि स्वीडन रे भी तंकर ओके अनरेस्ट अछि सेठी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. फ्रांस रो रीजन टा टिके अलगा और स्वीडन रे जा हिची जो होली बुक रो बर्निंग हिची ताकू रिलेटेड करी कि आउरी बहुत गुडे कंट्रीज रे से मानकर ओके दे आर दे हैव स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. ठीक अछि. सो एनीवे फ्रांस रे जो तंकर राइटिंग करिका सिविल अनरेस्ट अछि. So let us go to that and discuss it first. Okay, you can also add your points. ठीक अछि मु गोटे जनरल पर्सपेक्टिव देबी, then you can join in. काना सेटा बहुत ही इंपोर्टेंट आपण को भी सेतर किछि पार्टिसिपेशन रहबा दरकार. Okay, so first let us come to this. Okay, reason कोन ओके जोटा फ्रांस रे जो रॉइट्स जोटा स्टार्ट हैला
सो आपण जदि फ्रांस रो हिस्ट्री देखिबे तो फ्रेंच सोसाइटी रे ओके बहुत गुडे तांकर जो कॉलोनीज थिला ओके फ्रेंच कॉलोनीज उडा थिला सेठिकार लोक से माने फ्रेंच सिटीजनशिप नेशन गोटे टाइम थिला जोटी कि तांको सेमती मैन पावर दरकार थिला तेणु तांकर जो कॉलोनीज इफ यू सी हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री जदि हमें देखिबा ब्रिटिश वेयर मोर और लेस से माने एशियन कंट्रीज उपरे ओके मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज उपरे से माने तांको कॉलोनाइज करे ओके फ्रांस वाज लिटिल बिट लेट आउ से माने तांकर मेनली से अफ्रीकन कंट्रीज करिका ओके मेनली राइट सेठी से माने तांकर मैक्सिमम कॉलोनीज उडा सेठी रहला सो एनीवे तो ए जो पर्टिकुलर केस रे कोन हिची ना देयर वाज ए यंग बॉय who was driving a car which is basically similar to chori ro car thila whatever so he was just driving his car and police confronted him and due to jabi tanko bitare gote okay altercation heki he was shot dead by the police okay so, pilaro na thila Navel M okay so EU2 basically this was the trigger okay this was the trigger that does not mean that it am the prathama thara iti hechi okay France रे जदि हमें देखिबा लास्ट 5-6 कि इवन 10 वर्ष भितर सेठी वायलेंट ओके बहुत गुडे वायलेंस हेची इवन टेररिस्ट अटैक्स भी हेची ओके सो ए जो पर्टिकुलर पर्सन जे थिले नावेल एम ही वाज फ्रॉम अल्जेरियन डिसेंट ठीक अछि सो अगेन टिके डिटेल्स उडा जानिले आपन को पय सेटा सुविधा okay but the main question is what are the reasons okay reason ta eita hela taro trigger point ta but eita kebolo kaରଣ बोली हमें कहि परिबानी okay तांकर सोसाइटी की हमें जदि देखिबा फ्रेंच सोसाइटी okay so सेठी केते गुडे जिंस अछि ऑल्दो से माने कहउचंती हमें पूरा सेक्युलर हमर मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक मल्टी रेशियल कंट्री तांकर मेजर प्रॉब्लम कोन अछि after the French Revolution okay तांकर जो क्लास बेस्ड सोसाइटी थिला ठीक अछि तांकर जो डिफरेंट कोन तांकर जो सोसाइटी ता डिफरेंट क्लासेस रे डिवाइड हेतिला ओके फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट राइट सेटा को कंप्लीटली गोटे क्लासलेस सोसाइटी करिया पई से माने बहुत गुडे स्ट्रिक्ट लॉज आउट चेंज इन देयर थिंकिंग आनिले after the French Revolution. So, सेतरे कौन हैला ultimately what happened was कि आपण जोठु भी आसी थांतु आपण को कल्चरल बैकग्राउंड जहाँ भी थाउ सेठी फ्रांस रो जो नुआ लॉज गरिका हैला पोस्ट तकर रेवोल्यूशन लॉज आपण को सेटा मानिया पे पड़े सो इट इज काइंड ऑफ वन साइज ओके विल फिट एवरीवन सेही कांसेप्ट से माने चले तो इनिशियली ठीक थिला बट एबे दैट इज से जो पॉलिसी तांकर अछि तारो एटा गोटे फेलियर आपण कहि परिबे एज कंपेयर टू इंडिया एठी जदि हमें देखुछु एठी हमें बहुत फ्रीडम देछु हमर जो फ्रिंज ग्रुप्स अछंती किबा लेट्स से माइनॉरिटीज अछंती ओके जहा को जहा प्रॉब्लम हैला तांको प्रोटेस्ट करिवार राइट दिया आइछि तांको तांको कल्चर को प्रिजर्व करिवार राइट दिया आइछि इवन जदि भी बहुत प्रॉब्लम्स सेते पे हमें फेस करू लेट्स से नॉर्थ ईस्ट रे कोन ना गोटे स्टेट रो लोक प्रोटेस्ट करिवे जोटा आर्टेरियल द लाइफलाइन से रोड्स उडा ब्लॉक कर देबे आउ दीटा स्टेट को बहुत दिन से माने बेसिक सप्लाईज पाई परिबे किंबा हमें लेट्स से वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ शाहीन बाग प्रोटेस्ट ओके जोटी की मेजर रोड्स उडा ब्लॉक हे गला आउ बहुत मंथ्स पर्यंत सेटा ब्लॉक हेकी रहला आउ को कंट्री हेतले मे बी विथ फोर्स से माने ताको उठे देतांते बट हमरो एटी ओके इट इज बेसिकली दैट काइंड ऑफ फ्रीडम हैज बीन गिवन ओके तो एटी हमें से वन साइज फिट्स ऑल कांसेप्ट आने आपणकर जहा जो बैकग्राउंड रो आपण आछंती ओके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स योर राइट रिलीजियस राइट को प्रोटेक्ट करछि इवन आपण जदी इंडियन नुहंती भी ओके आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट्स योर राइट आल्सो योर रिलीजियस राइट तो एथि कोन हेछि ताकर से जिंसटा गोटे इश्यू हेछि और आस्ते आस्ते सेटा ए स्टेज को आछि
right? So this is the trigger point. You to start hela, but it has been building up for decades. ठीक अछि तो कौन तार प्रॉब्लम गोटे गोटे जिनस हला कि इमिग्रेंट्स जो माने अछंती फ्रांस रे लीगल इमिग्रेंट हुंतु कि इलीगल इमिग्रेंट हुंतु इकोनॉमिक हार्डशिप्स ओके यदि आपण देखिबे से माने गेटोज रे रुहंती ओके से माने एमती गोटे मेजर एरियाज रे ठीक अछि रहिबा तांको पय डिफिकल्ट बिकॉज़ से जो काम करूचंती तांको सेठी एते अपॉर्चुनिटीज बेसी नाही so number one hela economic hardships because there is discrimination in the job market okay एटा गोटे हला तापर lack of integration तो एटा दी आडू कहि परिबा हमें टिके टिके भूल रही जाय छी फ्रांस तरफ रु भूलटा कोन रही छी कि से माने से जो one fits all one size fits all से कांसेप्ट धरि की बस ओके जोटा कि केना तांकर जो डिफरेंट कंट्रीज रु तांकर ओके इमिग्रेंट्स माने आछंती बहुत गुडा तांकर निजर ही कॉलोनीज थिले से माने बेसिकली ते माने डिफरेंट कल्चर रु आछन ओके तनो से माने ऑब्वियसली से माने तांको कल्चर ता छाडी परिबे ओके सो लैक ऑफ इंटीग्रेशन द इशू इज फ्रॉम बोथ साइड्स फ्रांस एक्सपेक्ट्स एवरीवन ओके टू बिहेव इन वन पर्टिकुलर वे ठीक अछि जोटा कि आमे इंडिया रे से जिनसटा नाही लेट्स से हमरो एग्जांपल्स अछि कैबिनेट सेक्रेटरीज मानकर दे ओपनली फॉलोड देयर रिलीजियस जॉब बिलीव्स थिले ओके दैट मींस माने टीका वगैरह से गुडा भी सब लोग के असो देयर वाज अ पर्टिकुलर जेंटलमैन इन द 90s हु वाज द कैबिनेट सेक्रेटरी फ्रॉम साउथ इंडिया से जो माने वैष्णवाइट्स माने जेमते मार्क लगांती मुंडरे से लगोतिले ओके सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दैट फ्रीडम ठीक अछि सो लैक ऑफ इंटीग्रेशन तो ये जो इमिग्रेंट्स उडा से माने तांको कल्चर को बेसी धरि की बसिले व्हिच इज फाइन बट तांको आडू भूल भी रहले कि से माने सब फैसिलिटीज नेले फ्रांस रो किंतु तांकर जो बेसिक रिक्वायरमेंट अछि तांको सोसाइटी रो भलो जिंस उडा से गुडा से माने आपणे ना ओके तो लैक ऑफ इंटीग्रेशन द प्रॉब्लम इज फ्रॉम बोथ द साइड्स नॉट ओनली फ्रॉम वन साइड एगुडा देखो इंटरव्यू रो जिंस हैला एटा तमे मेंस आंसर लिखुनो ना केमती हमको लिखिबार अछि ए जो गुडा आपनकर मेजर पॉइंट्स गुडा रहिछि ओके एगुडा सब आपण ऐप रे पाइ जिवे ऑल दिस पीडीएफ्स एई गुडा हमरो बेसिकली कहिबार अछि एटा भी हमें सब कहि परिबा सो एज आई वाज टेलिंग यू इफ यू आर आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि व्हाट आर द अकॉर्डिंग टू यू okay what are the reasons for this problem in France and some other countries also and how it can be solved okay तो एगुडा एन्यूमरेट करिया पड़िबो ऑलवेज रिमेंबर ए जो टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सेप्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ओके बाकी जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पड़ला आपन को इंटरव्यू रे ताकू गणई की तांको आंसर देबे राइट सो द फर्स्ट रीजन फॉर दिस इज इकोनॉमिक हार्डशिप ओके द व्हिच द इमिग्रेंट्स आर फेसिंग तो आपन ताकू तपरे निजो ऑर्डर रे दे पारे राइट सो लैक ऑफ इंटीग्रेशन थर्ड आसिला डिस्क्रिमिनेशन ठीक अछि तो तांकर जॉब मार्केट रे हो कि इवन जनरली हो तांकर डिस्क्रिमिनेशन सेठी रहउछ ओके फॉर एग्जांपल लेट्स से you know the type of secularism that France practices they had a history से history को देखि कि ସେମାନେ सेमती करछे कोन होतला ना ओके प्री revolution France रे there was a complete you can say you know connivance between the clergy okay जो माने holy people ठीक अछि रिलीजियस पीपल जेमति हमर डी पंडित वगैरह सब अछंती तो से माने ओके एंड द जो माने रूल करथले ठीक अछि रूलर्स वरिका द नोबल्स तो तांको भीतर गोटे ओके कनाइवेंस है कि से माने बेसिकली जो कॉमन पीपल तांको सप्रेस करके रखते ठीक अछि एबे जेतबेले रेवोल्यूशन हैला तो से माने एंश्योर कले कि रिलीजन इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट एंड रिलीजन आर टू वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स तांको केस ओके हाउ जदी पब्लिक रे आपण रिलीजियस किछि भी रिलीजियस करूचंती ताले तारो बहुत माने यू नो बहुत ही स्ट्रांग एक्शन नियंती ओके फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू एनी पब्लिक स्कूल इन फ्रांस सेठी गोटे हिंदू पिला को तिलक लगेबार राइट से माने देबेनी गोटे सिख पिला को
टर्बन लगेबार राइट देबेनी इनफैक्ट तांकर से माने रूल करछन जो टर्बन भी से माने लगौछंती इट इज मोर लाइक ए शावर कैप भले सेटा देखा जाउछ ओके सेम थिंग विथ ऑल अदर रिलीजन्स राइट पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन सेटा से माने ताका पब्लिक स्पेस रे एते से माने पसंद करते whereas in case of India से राइट ता पूरा दिया छि ओके तापरे पॉलिटिकल टेंशन सो just like everywhere in the world ठीक अछि there is the extreme right and the extreme left ठीक अछि एबे जदि हमें यूरोप रे देखिबा प्राय बहुत गुडे कंट्रीज रे ताकर एक्सट्रीम राइट पावर को आसुछ कोन पई ना प्राय एक्सट्रीम राइट जो माने एक्सट्रीम राइट पार्टीज गुडा से माने एंटी इमिग्रेशन कि बाहर लोक आसी कि आम रिसोर्सेज ऊपर न बसी जात ठीक अछि सो एंड ड्यू टू द वेरियस यू नो जहाँ जहाँ सब होची दुनिया रे ताकू देखि कि एबे लोक भी आस्ते आस्ते ओके तांको आडू को गलेनी सो इन मेनी कंट्रीज देयर इज राइट विंग गवर्नमेंट राइट इन सेवरल कंट्रीज इन यूरोप इटली रे एबे जेमति कि चलची सेट ओके आउ भी बहुत कंट्रीज अछि राइट सो पॉलिटिकल टेंशंस राइट तो एटा गोटे जिंस फ्रांस हैज अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इट नेटिव बॉर्न सिटीजन्स एंड immigrants in fact माने एटा एबे का कथा न आई विल गिव यू वन एग्जांपल सेटा आपन टिके गूगल करी के देखिबे यू नो द नोट्रे डैम ओके नोट्रे डैम डी पेरिस माने इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैथेड्रल्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही पुराना आ तार जो सब ग्लास रे जो काम उडा हेतिला सेटा माने वर्ल्ड रे बहुत यूनिक थिला ओके जो माने लिटरेचर भल लगे जांको you must have heard about a very you know beautiful story called the Hunchback of Notre Dame okay तो से Notre Dame को पोड़ी दी थिले immigrants माने one of them जा भी so it was an act of you know sabotage okay एते तांकर heritage जिनसटा सेटा destroy हो जायतिला but still then okay तापरे rise of right wing populism जो कथाटा कहली and सेटा not only in France but in other European countries as well कहीं ना कौन ना एबे it is a global phenomena ठीक अछि किछिटा कंट्रीज के छाड़ देले it is a global phenomena जोटी की प्राय लोक माने गोटे परसेप्शन ऑफ ए स्ट्रांग लीडर को पसंद करछन हां ये आउ राइट विंग लीडर्स माने जनरली से परसेप्शन ता दियंत because they are hardliners generally they are highly nationalist okay plus जो जिंसो लोकल पॉपुलेशन की नेटिव पॉपुलेशन तांकू जो जिंसोडा दरकार से माने सेही जिंसोडा बेसिकली को सो मोर और लेस दे आर अगेंस्ट these immigrants okay so rise of right wing populism तापरे कोविड-19 पैंडेमिक हैज अफेक्टेड समस्त को अफेक्ट करछि तेनु तांको नेटिव्स को भी अफेक्ट करछि ओके हाउ इमिग्रेंट्स को तो ऑब्वियसली अफेक्ट करछि राइट तेनु नाउ देयर इज अ कंपटीशन फॉर व्हाटएवर रिसोर्सेज इज देयर ओके एबे आपण देखुचंती लास्ट फ्यू डेज रे द नेटिव पॉपुलेशन इज फाइटिंग बैक इनफैक्ट आपको देखि कि ये जो एठी नेटिव पॉपुलेशन जहा कलेनी इन अदर कंट्रीज जोठी कि एपर्यंत सेमति किछि हेइनी देयर द नेटिव पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एग्जांपल तुर्की और टर्की जोड़ आगुर तो टर्की इज बेसिकली ए इस्लामिक कंट्री ओके और एटलीस्ट करंट गवर्नमेंट जोटा तांकर अछि सी ताकू ओके ताकू गोटे you know तांकर जे एर्दोगान जे अछंती सी ही इज नोन एज ए इस्लामिक हार्डलाइनर ओके तेनु से हिसाब रे से माने भी प्रोटेस्ट करलेनी कि आम देश रे जो माने इमिग्रेंट्स अछंती तांकू बाहर कर राइट सो दिस इज स्प्रेडिंग टू अदर कंट्रीज एज वेल कि ये माने फ्रांस रे जेमती इमिग्रेंट्स माने एमती गोटे डेवलप देश को एमती प्रॉब्लम रे पकई देले तो सेटा आम देश संगे न हो राइट देन द वार इन यूक्रेन तो एटा France and other European countries upare taro effect heich the Ukrainian refugees have come to France in search of safety okay तो जेमती आम संगे बांग्लादेश वार पर हेतिला okay limited resources किंतु सेतरे अधिका स्ट्रेन हमर पडुछ राइट तापरे आउ किछटा स्पेसिफिक एग्जांपल्स अछि द चार्ली हेब्डो अटैक्स सी फ्रांस रे सेठी ताकर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ओके से माने बहुत इंपोर्टेंस दियंती बहुत ही ताको ओपन लेवल रे से माने रखंती राइट नॉट लाइक स्वीडन बट एटलीस्ट इट इज क्वाइट ओपन तो चार्ली हेब्डो जो गोटे सेटा गोटे
न्यूज़पेपर किंबा आपण कहि परिबे गोटे जर्नल टाइप रो थिला जे कि ऑब्जेक्शनेबल किंबा कैरिकेचर्स से माने बाहर करथिले ओके प्रॉफिट मोहम्मद राइट तो बेसिकली इन इस्लाम यू कैन नॉट डिपिक्ट ओके इन एनी फॉर्म ओके प्रॉफिट को अपन डिपिक्ट कर परिबे राइट so there was attacks and lot of people were killed there and entire French society माने जोटा नेटिव सोसाइटी जोटा तांकर से माने आपको सपोर्ट कले ओके इफ यू रिमेंबर सेतबेले से माने गोटे ताकू मोर मने पड़े ठीक रे इट वाज आई गेस जेसीएस चार्ली चेक कर देबे स्पेलिंग टा ओके means I am Charlie means I am identifying with what this Charlie Hebdo okay माने जा करथिले आमे सपोर्ट करू अगेन ए जिंसटा जेतले माइग्रेंट्स माने देखुचंती कि अच्छा ए माने एटा गोटे भूल जिंस आम कल्चर एगेंस्ट माने करचंती प्लस ता परे भी से माने सॉलिडारिटी देखौछन राइट सो अगेन द जो फॉल्ट लाइन्स अछि आपनकर से आउरी बॉडी बॉडी चल राइट देन दिस इज ए बिग issue सब जगह इंडिया रे हो सिटी हो दैट इज द राइज ऑफ सोशल मीडिया ओके तो इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन दीटा जको एथरे शेयर होछ ओके सो दिस इज अनदर रीजन एंड अनदर प्रॉब्लम इज लैक ऑफ ए क्लियर इमिग्रेशन पॉलिसी एटा खाली फ्रांस पाई नो एटा एंटायर यूरोप यूरोपियन यूनियन that has been based on the simple principle of okay open borders that means without any restriction there will be movement of men and material ठीक अछि तो लोक माने आसी परिबे तांको के अटकेइबेनी सो दे विल टेक रेफ्यूजीज ठीक अछि तो इवन जेतबेले पाखा पाखी कंट्रीज फॉर एग्जांपल मेनी कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट से माने रेफ्यूजीज मानकु नेबेनी ओके व्हिच यूएई एंड ऑल से माने क्लियर कर दैछन कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजन फॉर अस एमाने जो माने नौचंती ये गोटे दिन हैरान हेबे एटा से माने बहुत आगुरु कहिछन तो तांको पॉलिसी बहुत क्लियर वी डोंट वांट ओके ए टाइप रो हमरो इमिग्रेंट्स दरकार नै तो ये जो पॉलिसी आंकर यूरोप रो अगेन यू कैन डिवाइड दिस यूरोपियन कंट्रीज इनटू टू टाइप्स जो ठिकी से इंटीग्रेशन ता टिके अधिका लेवल रे हिच बट एट अ वेरी हाई प्राइस एग्जांपल जर्मनी रे ए इमिग्रेंट्स माने टिके बेटर इंटीग्रेटेड हे हिच ओके से माने सेठी भी बहुत भूल भाल जिंस करछथि बट जर्मन सोसाइटी इज रिलेटिवली मोर टॉलरेंट ओके तो सेठी आपण एई टाइप रो जिंस देखु ना बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंक्रीज इन द क्राइम अगेंस्ट द लोकल पॉपुलेशन बाय दिस इमिग्रेंट्स ठीक अछि जेमति ग्रूमिंग केसेस रोची आपणकर ठीक अछि तो सो लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर सो यूरोपियन यूनियन रे एक क्लियर इमिग्रेशन पॉलिसी नहीं तारो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट वे फॉलो कर okay so some countries they accept what the European Union is saying some countries they are very clear jaha bhi he jo ame particular immigrants को allow करिबु नाही जा हे जो पछे पोलैंड इज वन एग्जांपल ठीक अछि एबे किते जण तारी एग्जांपल धरि छथि ओके सो लैक ऑफ क्लियर इमिग्रेशन पॉलिसी ओके तो एटा हला था रीजंस एबे सॉल्यूशंस कोन तो ऑब्वियसली क्रिएशन ऑफ जॉब्स फॉर इमिग्रेंट्स आपण जदी कहा को अलाउ करचंदी आपण देश रे पसिया पे ताको पुनी गोटे डिसेंट लिविंग रो व्यवस्था करियार अछि नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट्स ताकर सेठी कोन सब अनएम्प्लॉयमेंट ओके काइंड ऑफ ग्रांट्स मिल जिंते हमर रेडी केते केते स्टेट से अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलुची तो सेही टाइप रो मोर हाउसिंग फॉर इमिग्रेंट्स मींस द बेसिक नीड्स ताकर सेटा ओके गवर्नमेंट को देखिबार अछि कि तापके रिसोर्सेस थिबो ताको फुलफिल करिया पे एजुकेशन अगेन सोशल सर्विस पे आउरी फंडिंग व्हिच इज अगेन नेटिव पॉपुलेशन काई रागुची ना प्रथमे तो हमरो रिसोर्सेस लिमिटेड रहउची ओके ता ऊपरे एमानक पई हमरो टैक्स पेयर रो मनीटा खर्च होउची प्रमोट टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एटा गोटे जिंसो फ्रेंड्स करियार अछि कि ताको आउरी टिके मल्टी कल्चरल एंड this one size fits all से जिंसो चली परिबन राइट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोक आसीचंती इमिग्रेंट्स तांकर कल्चरल हेरिटेज और तांकर सेटा को भी आपन को टिके बुझिया पे पड़िबो ओके रिफॉर्म द इमिग्रेशन सिस्टम सो क्लियरली यू स्पेल आउट काना से इमिग्रेंट्स माने से माने कोन पय आछन सेठी तांकर जोठी नेटिव तांको सेठी अपॉर्चुनिटी मिलिनी ओके
तो से माने से पे आपण देश को आछन आपण भी अलाउ करछन ठीक अछि आपण भी ताको अलाउ करछन तेनु से माने आसिला परे ताकर गोटे क्लियर प्रोसेस आपण को रखिबार अछि कि हां तुमे आसिलो ताले एई वे रे जदि तुमे जाउछो फाइनली यू विल गेट French citizenship. Okay, but nowadays because of this politics, okay, kiye gote party, left wing parties se mane they are welcoming, right wing parties they are saying that ame power re asile amku bahar kato. ठीक है. So address the root cause of unrest. So what are the root causes of unrest? जोड़ा हमें देखिलु poverty, unemployment, discrimination. ठीक है. So एथरे कौन you have to understand each other better. ठीक अच्छे तो आंकर इश्यूटा से फ्रांस रे कि से जो जहाँ गोटे जिनस समस्त भल समस्ते सेटा ही करेंगे ओके सो सेटा तांकर जो पोस्ट रेवोल्यूशन इफेक्ट आपण कहि परिबे बट सेटा आजिकली इट विल नॉट ओके बी पॉसिबल टू कंटिन्यू विथ दैट काहेकि ना तांकर जेतेबेले रेवोल्यूशन हेतिला तांकर डेमोग्राफी अलगा थिला नाउ दैट डेमोग्राफी हैज चेंज्ड आउ बहुत गुडे यूरोपियन कंट्रीज रे सेम जिंस होइछ यू टेक फॉर एग्जांपल बेल्जियम नेटो रो हेडक्वार्टर प्राय एंड नेटो रो कहली यूरोपियन यूनियन रो ओके बहुत गुडे तांकर एजेंसीज रो सेटा हेडक्वार्टर ओके ब्रसेल्स राइट सो बेल्जियम रे बेसिकली तांकर सेम तांकर डेमोग्राफिक चेंज ही जेची सेटी ओके तो सेटी इमिग्रेंट्स माने यू नो बट सेटी कोन ना सेटी भी प्रोटेस्ट होची so increase police accountability it started trigger point से जिंस थिला and this is everywhere in Europe सब जगह रे एठी टिके अधिका अमेरिका रे तो you know it is their police is completely militarized okay तो जो police brutality रहउची against the minorities racial minorities हुंतु religious minorities हुंतु तांको ऊपर जो okay so you know about the case of George Floyd और बहुत जण अछथि यूएस रे okay so police accountability आउरी बढ़िबार अछि फॉर एग्जांपल हम जदि भाबिबा से पिलाटा 17 वर्ष पिलाटा से ओटे येलो गाड़ी नै कि जाउतला से गाड़ीटा चोरी रही तो जा भी हेतो से कोन करथांत से गाड़ी ठीक अछि अवश्य तांको गवर्नमेंट रो कहया कथा कि एमती आगुरु हेछि कि गाड़ी नै कि ओके इफ यू सी आई थिंक दैट वाज इन 2017 और 18 तो गाड़ी नै कि से पसिगला गोटे बहुत ही क्राउडेड एरिया रे एंड लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड ठीक है तो सेमती गोटे ही पर चाहते सो से माने भी जस्टिफाई करछन इन्वेस्ट इन कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सो देयर हैज टू बी कम्युनिटी टू कम्युनिटी पीपल कांटेक्ट तांको कल्चर आमे बुझिबो आम कल्चर से माने बुझिबो ओके एंड एंगेज इन डायलॉग विथ द इमिग्रेंट कम्युनिटीज सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आपण को नबर अछि से माने बाबुचंदी स्टेट इज अगेंस्ट अस ओके यू हैव टू यू नो मेक देम अंडरस्टैंड कि स्टेट आपण को अगेंस्ट नहीं स्टेट तो आपण को अलाउ कला ना एठी आसी तो आपण जेंति भलो हबो आ देशर भी जेंति भलो हबो सेटा देखिबार अछि एट द सेम टाइम another thing is that a law okay has to be properly enforced आपण देखु जदि कोन होछि ना एई बहाना रे जो lawless people they are involving themselves in open loot ठीक अछि तो आपण सुपर स्टोर सुडा भांगी देकी सेथरु जिंस लूट करके नै जाउ छथि the same thing you will also see in the black life matter से तांकर जो सब प्रोटेस्ट करिका होय यूएस रे that is arson and looting एगुडा प्रोटेस्ट रो कोनोसी फॉर्म नो these are not ता माने कोन ना ए माने जानि सुनि के जिंसडा करछंती so that ए माने किछि लाइक केंति लूट करिका करबे ओके arson पब्लिक प्रॉपर्टी जळे देबा सेतर कोन लाभ होछ प्लस लूटिंग ओके सो जो माने करूछंती ताको छडा हबनी एमनेस्टी दिया हबनी ताको they have to be persecuted that also has to be kept in mind French government eporjento korichi kon it has created a new ministry for citizenship and immigration okay but again it is between like semane Germany आडू को भी जीवा पे चाहुनांती Germany रे टिके बहुत ही relaxed rules for immigration okay आउ semane Italy side को भी जीवा पे चाहुनांती जे कि एबे बहुत टफ हे गलानी immigration पर कि Poland side तो semane मझी मझिया रही कि semane okay so clear तांको गोटे तांकर immigration strategy रखिबार अछि government has announced series of measures to create more jobs for immigrants okay more housing for immigrants improve education and training opportunities for immigrants तो जार गोटे जॉब अछि प्रॉपर जॉब अछि से एमते आर्सन आउ लूटिंग रे मे भी इन्वॉल्व न हे पर ओके
Government has also announced plan for reforms of the immigration system and to increase police accountability. And it has pledged to engage in dialogue with immigrant communities and to listen to their concerns, but it will take some time. Kahinkina ei jinsota emti hatat kini France re heini, it has a last decade or so re 10 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି France ରେ ei ଜିନିଷଟା okay ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ এটা violent ରୂପ ନଉଛି, right? So these are some of the points that we have to give in our answer. ସବୁ ଗୁଡା ତ କେବେ ବି ଆମେ answer ରେ include କରିପାରିବାନି, but style of answering will be okay, you will enumerate. So the first reason for this problem is this, second reason is this, it is 7-8 points deji apan at least 4 ta koibe. And now coming to the solutions, the first and most important step in solving this issue is bringing the communities together, understanding the differences and accepting the differences and coexisting with the differences and the diversity. Okay, the one size fit all सेटा totally काम करिबो. Okay, बुझि पाले एटा. So एठी जेते गुडे सब पॉइंट्स आपनकर दिया हिची ता भितरु 3-4टा पॉइंट हमें कहि पारे, कारण एते टाइम तो से देबेनी आपनको कि आपन गुटे आंसर 2 minutes 3 minutes कहले आ बहुत प्रकार रो क्वेश्चन सेतरे पचरा. Okay, any doubts regarding this then you can ask. Okay, generally सबले मन रखिबे, do not criticize any government. Okay, माने vitriolic criticism आपण कौन करि परिबे ना constructive criticism. Example हला कि फ्रेंच गवर्नमेंट एया करि जंती आउ जदी एया करि थांते ताले आउरी बेटर रिजल्ट हुंता, rather than saying that फ्रेंच गवर्नमेंट एया करि नांती सेत पे एटा फेल हेगा. बुझि पाउछन जेते बेले भी आपण नेगेटिव साइड ता देखिबे सेटा एई वे रे आपण को प्रेजेंट करिवार अछि. Okay, so for this particular empty around 50 ta important issues achi, which everyday 5-6 issues we will see. Okay, a particular immigrant unrest upare any doubts, any questions that you want to ask, then you can ask. Okay, 2 minutes to ask any question or to initiate any discussion, then we will go to the next part jota aaj amar dekhiba. Okay, now second important issue है ला India ru the Manipur issue. Okay, almost same violence related. Ethi amaro eta ethnic violence hochi. Okay, and reasons कौन how solutions कौन how government कौन step needs. So first reason है ला कि ethnic tension, it is mainly a ethnic issue in the sense that different tribes करा okay बहुत दिन हैला even before independence तांकर separate आउ unique आउ distinct culture बरिका अछि. Okay, आउ तांकर requirements भी अलग अलग अछि. तो mainly Metis, Nagas and Kukis. Okay, so before being integrated or joining the Union of India एमानकर सब agenda टिके अलग अलग थिला. एबे for example recently कोन दी दिन आगु जो कुकी ट्राइब करो ताकर गोटे one of the groups ता कहया कथा we are more close to China okay in our culture. तो एटा त माने क्लियरली जणा पड़ी गला कि एथरे चाइनीज सपोर्ट रहउची. म्यांमार रो तो ऑब्वियसली रहउची काहे कि ना गोटे डिस्टर्बिंग जिंसो हैला कि सिविलियंस माने ओके तांको पाखरे भी बहुत ही एडवांस्ड ऑटोमेटिक वेपन्स अछि जोथ भाई सेंट्रल फोर्सेस सेठी बेसी किछि करि पाउना. जेमति कि रिसेंटली काली रही रैपिड एक्शन फोर्स ओके आरएएफ से माने तांको पॉलिसी कहिसंती कि आम वी आर बेसिकली ट्रेन फॉर रॉइट्स ओके रॉइट प्रोटेक्शन और लार्ज क्राउड को, बट एटी माने ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल संगे जेतबेले आसुचंती तो आम पई सेटा इश्यूज रहउची. तो एटा को खाली आर्मी और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स करिका ताको हैंडल करि पारि. तो तांको पाखे आसिला कोटू वेपन्स
ओके आउ जोग्राफिकली भी जदि देखिबे इम्फाल वैलीटा तो चारि पटे सेटा सराउंडेड बाय जो अपर रीचेस रे हिल पीपल जो माने कुकीज माने अछो और मेटिस माने बेसिकली से वैली तळे आपन को प्लेन रे अछो तो इवन बहुत टाइम रे बे कोन होची ना फायरिंग होची ऊपरू जोटा की से लोक मान को हैरान करछ ओके सो एथनिक टेंशन्स जे एबे बढ़ी जाई से न एटा बहुत आगुरु थिला एबे ट्रिगर पॉइंट कौन है ना ताकर हाई कोर्ट ओके से गोटे ऑर्डर देथिले कि मेटिस को पाई ओके रिजर्वेशंस रहो ओके मेटिस आर जनरली इन मेजॉरिटी तो अदर द कुकीज मेनली से माने ताको अपोज करूछ ओके द कुकीज आर वेल आर्म्ड कुकीज को ओरिजिन टा मेनली म्यांमार रु तेणु मेटिस माने कहउछन्ती कि से माने इंडियन नो से बाहरु आछन्ती बट से माने बहुत वर्ष रे सेठी रहि आछ okay so they are well armed that is another problem for the government then here we have to follow a policy which international relation रे कि generally हमें ताको okay carrot और stick policy कहा जाउछ तो carrot और stick policy कोन ना एथरे you know that एमानको पाके weapons अछि civilians को पाके ताको बाहर करियार अछि कि से weapons पठौ से नेटवर्क को आस्ते आस्ते आपनको भांगीवार अछि सो किछटा लॉन्ग टर्म मेजर्स हमको न पड़िबो किछटा इमीडिएट मेजर्स हमको न पड़िबो So demand for sovereignty तार कितना insurgent groups अछंती okay like PLA and UNLF जो माने independence from India से माने चाहुचंती ए माने बहुत आगुरु भी एटा चलैथिले but due to ceasefire by government of India and due to various forces okay जेंति कि आर्मी सेठी डेप्यूटेड थिला बहुत जगह रे तार बहुत गुडे जगह रे तांकर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी लागि छि ठीक अछि सो मोर और लेस इट वाज वेरी पीसफुल बट ए इश्यू रे ओके आउ बाहर किछि भी इंटरफेरेंस सेतरे रहउची म्यांमार रो आउ चाइना रो कहना तांको जो वेपन रे मिलुची मेनली सेटा चाइनीज वेपन्स ओके सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सो दीस ट्राइब्स आर यू नो दे आर क्वाइट डिस्टिंक्ट तांको भितरे बहुत माने डिफरेंसेस अछि आउ से माने तांकर निजरो एथनिक आइडेंटिटी टाको प्रोटेक्ट करिया पई चाहउछ ओके सो एतरे गोटे आउ गोटे जिंस भी अछि हम तीनटा ट्राइब देखिलु नागा ट्राइब इज आल्सो प्रेजेंट देयर नागा ट्राइब रो कोन तांकर हला जो कांसेप्ट ऑफ ग्रेटर नागालैंड और से ग्रेटर नागालैंड भितरे एटा भी आसु ओके दिस इज आल्सो कमिंग अंडर देयर प्लान्ड ग्रेटर नागालैंड ओके मणिपुर भी आसु सम पार्ट्स देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज तेनो एटा भी तांको कहया कथा कि आमे यू नो मेटिस कर भी कहया कथा कि यू नो ड्यू टू दिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट किंता ए माने कुकीज माने बहुत गुडे फॉरेस्ट रिसोर्सेस ताको पाखु पळौची और से फॉरेस्ट लैंड उडा से माने कब्जा करिक रख दिछ ओके सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अंडर डेवलपमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सेटा तो ऑब्वियसली आउ गोटे बहुत बड़ इश्यू हैला दैट इज ड्रग ट्रैफिकिंग बिकॉज यू नो दैट एटा पूरा क्लोज टू द गोल्डन ट्रायंगल ठीक अछि हमर जो दीटा इंडिया रा दी साइड रे मेजर ड्रग रूट्स अछि वेस्ट को अपन को रह गला द गोल्डन क्रिसेंट और ईस्ट साइड को रह गला गोल्डन ट्रायंगल तो म्यांमार तार गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्ट ओके सो ड्रग ट्रैफिकिंग आउ आस्ते आस्ते कोन ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ता ऊपर आस्ते आस्ते इट वाज एक्टिंग ऑन दैट ओके तापर इलीगल आर्म्स ट्रेड राइट सो चाइनीज एंड द म्यांमार तांकर जो सब मिलिटेंट ग्रुप्स अछंती से माने civilians manako kimba at least apa koi paribe cookie civilians manako they have okay provided arms to them ठीक अछि ebe metis mane now they are arming themselves ठीक अछि so now it will be a very difficult situation to contain then border disputes manipur ro border disputes अछि नागालैंड संगे okay जोटा कि मु कहउतली से नागालैंड रो जो तांकर कांसेप्ट थिला ग्रेटर नागालैंड रो तो सेतरे खाली मणिपुर नो पाखा पाखी आउरी केते गुडा स्टेट्स भी ओके तार जगह गुडा भी आसी जाउछ देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो अपन देखिबे आगुरु आपण जो पॉलिटिकल पार्टीज जने रूल करूचंती बहुत कम केस रे 5 वर्ष से माने कंप्लीट करि पारुते ओके तापरे ए जो फॉल्ट लाइंस गुडा अछि आको सॉल्व करिया पई एते वर्ष हैला कॉन्क्रीट मेजर्स किछि निया है सो इनसफिशिएंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेजर्स ओके सो फाइनली ए सबु मिसे कि आपण कहि परिबे we are now in this situation solution आपण केमति कर परिबे
सो डायलॉग प्रमोशन ऑफ डायलॉग्स जोटा कि एबे टिके वेरे चलिलानी इनफैक्ट ए वायलेंस स्टार्ट केतले हला तो गोटे मेजर कुकी ग्रुप से माने तांकर ओके जेतले प्रोटेस्ट स्टार्ट कले ठीक अछि तापरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तणु इकोनॉमिक डेवलपमेंट मणिपुर रो होउथिला बिकॉज इट वाज one of the most important parts in the Act East policy government ro jota thila okay so economic development skill and education cultural respect and integration this is very important because all these three major tribes semanakar cultural ethos alga alga okay so with diversity tanku ताको एमती न लागू कि आरो ट्राइब टा मोर राइट्स नहीं छी okay so they have to coexist with each other and they have to divide resources accordingly okay next number 5 which is very important is strengthening law enforcement okay so law enforcement रे कोन ना जो माने especially those civilians who have having these weapons and all तो systematically आपण से जो नेटवर्क टा को भांगिबे ओके सो स्ट्रेंथनिंग लॉ एनफोर्समेंट तो सेतरे जहा दरकार जते स्ट्रांग स्टेप्स दरकार सेगुडा आस्ते आस्ते नवा पय पड़ी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेकानिजम्स तेनु जदी गोटे कोटी कॉन्फ्लिक्ट हैला जेंति हमें लोकली जेंति कोच ओडिसा रे हमरो जो कम्युनली सेंसिटिव जगह उडा अछि सेठी हमें कोन शांति कमिटीज करिछु पीस कमिटीज लोकल पीस कमिटीज सब जगह रे सेंति थाए तो एई जगह रे भी ताकर ट्राइबल कमिटीज करिका ओके ऑलरेडी अछि गवर्नमेंट फॉर्म करछि तो ताको आउरी इफेक्टिव बनेबार अछि then political stability ebe more or less political stability achi but then due to these problems okay political stability also becomes a hostage jemti ki di din aguru tankara chief minister jaitile au media re governor ko pakku tanko au media re ko out ki se bote resignation de right tapare border negotiations tenu jo pakha pakhi states achi manipur ro okay to se states ko sangere पीसफुली केमती बॉर्डर डिस्प्यूट तांकर सेटा रिजॉल्व हे पारे कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड पीस एजुकेशन जोड़ा कि से पीस कमिटी करिका एई सब स्टेप्स करिका आपण कहि पारे ऑलरेडी गवर्नमेंट किछ स्टेप्स नै चंती कोन सेटा ना सीजफायर एग्रीमेंट्स ओके सो सम सीजफायर एग्रीमेंट्स एक्चुअली आगुरु इंसर्जेंसी जतले स्टार्ट हैला नॉर्थ ईस्ट रे तो ए सब जगह रे इट वाज अ रेगुलर अफेयर की बहुत वायलेंस हो ओके बट relatively the last decade or so it a bahut कमी जाइछ okay because of the various ceasefire agreements with different northeast groups okay so let's say different states in the NSCM IML okay तो तांका संगरे तांकर जहा पॉलिटिकल डिमांड्स थिला okay ताको फुलफिल करा हैनी बट ठीक अछि गोटे मिडिल पाथ नै कि से माने भी दे हैव okay accepted the ceasefire but still they are armed से माने unarmed no से माने armed अछन right तो हठात कि केबे जदि तांकर रिक्वायरमेंट हैला से माने वायलेंस करि पारे ओके सो सीजफायर एग्रीमेंट्स हमरो एस्टैब्लिश्ड और जो इंसर्जेंट ग्रुप्स जोड़ा अछि जोड़ा कि आगुरु बहुत वायलेंस करछथि ताका संगरे मोस्ट ऑफ देम और मेजॉरिटी ऑफ देम हमरो सीजफायर एग्रीमेंट्स अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तापर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन द असम राइफल्स हैला देन स्टेट लेवल रे से माने तांकर भी फॉर्मेशन करिछथि सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन स्कीम सो दोस मिलिटेंट्स इंसर्जेंट्स जो माने सरेंडर करछथि तो तांको रिहैबिलिटेट कराबो ओके ता माने तांको किछि गोटे आइदर स्किल्स इम्पार्ट कराबो कोडी जॉब दियाबो सेटा देन इकोनॉमिक पैकेजेस ओके सो वेरियस इकोनॉमिक पैकेजेस बोथ फॉर द हिल पीपल एंड द प्लेन पीपल ओके दी जणो को पई इकोनॉमिक पैकेजेस रोज केना एठी कोन द परसेप्शन ऑफ द अदर साइड टेकिंग अवे माय रिसोर्सेस माय राइट्स सेटा हला सबटु बड़ प्रॉब्लम okay dialogue initiative improve border surveillance so we are having a substantial portion of our border with Myanmar which is not fenced okay due to the terrain and all ebe government of India taku war footing re se kamata start karibo ki seti amku jaha bi hele border amu close karibar ଅଛି seti okay and autonomous district councils okay joda ame already discuss करथुलु कि तांको autonomous district councils formation हेछि आउ तांकर जो लोकल ऑटोनॉमी जोटा बहुत मात्रा तांको दिया हिच ओके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तापरे प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस राइट्स जेमति कि कुकीज वन हिल पीपल जो माने रहले और इवन द मेटेज माने रहले ओके तांकर मेन इंस वाला कि माने लैंड ऊपर कुकीज माने जो हिल साइड रो लैंड ऊपर
ସେମାନେ କब्जा କରିदौछन सो मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स रूल्स कि लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 जोटा सब बेले तार अमेंड होता है राइट तो सेही सब एक्ट्स करिका भी हमर ओके इंडिजिनस राइट ऑफ दिस ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करिया पई द स्टेट गवर्नमेंट करिका करिछन देन क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड engaging international cooperation because the source is from Myanmar एमाने जो सब वेपन्स आनी के देइछंती कुकी सिविलियंस मानको तो सेमाने कोन करछंती ना नाइट रेड्स करछंती एबे लास्ट के दिन ता माने सब जगह तो आर्मी रखियो ना तो गोटे छोटो विलेज अछि सेठी सेमाने जाउछंती विथ देयर ऑटोमेटिक राइफल्स और सेठी लोको मारी की पुनी हिल को पळे आछंती ओके इन द नाइट सो इट इज वेरी डिफिकल्ट सेटा कंटेन करिया एबे मेटिस माने कोन करछंती सेमाने तांगर वीडीसीस करिका फॉर्म करछंती जेमती कश्मीर रे थिला विलेज डिफेंस कमिटीज से माने भी प्रोक्योर करछंती कोठु कोन इंफीरियर वेपन्स बट दे आर नाउ हैविंग वेपन्स तो अल्टीमेटली जो वेपनाइजेशन हे होची सोसाइटी रो से जगह रे एटा आगु को जाय कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम करि पारे राइट सो दीस आर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ओके इन दिस केस राइट तापरे दिस इज सेकंड थिंग तापरे ओडिसा को जदी आसीबा so it is opinion based question ki Odisha is a poor state okay amaro eti unemployment and all ei sabu jinsu sub rohi jemti gote backward state re ruhe we can say we are a developing state in many of the metrics okay ame as both improve follow so despite being a poor state Odisha is investing a lot of resources in promotion of sports what is your opinion regarding this so am gote pragmatic positive answer dabar achi jetra ओके सो एडवांटेजेस एथरे कोन रहउची फर्स्ट तो हला लोक माने फिट रहउचन प्रमोटिंग हेल्थ एंड फिटनेस तो सही तरह बहुत पैसा आपनकर गवर्नमेंट रो सेव हिज ओके देन डेवलपिंग लाइफ स्किल्स ओके तो स्पोर्ट्स रे जदी आपन रहउचंती ऑब्वियसली आपन इनडिसिप्लिन्ड आ एराटिक जदी आपन रहिबे ताले ऑब्वियसली आपन परफॉर्म करि परिबे सो टीम वर्क लीडरशिप डिसिप्लिन रेजिलियंस गोल सेटिंग ओके एटा केवल आपनकर यू नो स्पोर्ट्स आपनको खाली फील्ड रे सिकोनी फॉर योर लाइफ आल्सो यू आर गेटिंग दिस स्किल्स एंगेजमेंट ऑफ यूथ तेनो हमें फुटबॉल रो एग्जांपल दे परिबा हॉकी रो एग्जांपल दे परिबा ओके जोटी की ओडिसा प्रमोट करचे स्पोर्ट्स गुडा आउ जो यूथ पाके टैलेंट अछि से माने एथरे आसुचंती एंड दे आर विनिंग इन लॉट ऑफ मेडल्स एंड एक्कोलेट्स इन द इंटरनेशनल फोरस ठीक है तापरे कम्युनिटी बिल्डिंग राइट बूस्टिंग सेल्फ एस्टीम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो अदरवाइज ताको एते अपॉर्चुनिटी एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज एते मिली न था कि से माने एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज एते अवेल करि पार न था बट ए जो ताको स्पोर्ट्स से अपॉर्चुनिटी मिलला इट आल्सो इंश्योर्स दैट तांकर ओके इकोनॉमिक वेलबीइंग आउ गोटे हला ड्यू टू स्पोर्ट्स infrastructure is being created amar dekho to kette bolo bolo stadiums ho hoichi okay so seita bi sports related tourism को आउरी बढ़ेबो ओके तापरे जो लोक जानिनी ओडिसा पे कोन हो इंटरनेशनल मैचेस हेले सी आसीला ओडिसा को आसीले से टेंपल्स देखिला बीचेस देखिला ओके हमर जत्ते सब टूरिस्ट प्लेसेस को गला सो एंड ही स्प्रेड्स द वर्ड द कंट्री की जाएंगे कहबो कि जाइतिले एटी ओके सो मोर एंड मोर पीपल विल कम राइट तापरे एजुकेशन इंसेंटिव राइट सो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्पोर्ट कोटा जोड़ा हम कहू स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप थ्रू रू जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स अछंती बट ताकर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड रो अछंती तो से माने पाठ भी पढ़ी पारले प्लस स्पोर्ट्स रे भी रहि पारले ओके प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इफ यू सी हॉकी हो फुटबॉल हो आउ भी जत्ते स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा प्रमोट करछंती सेतर वुमेन को बहुत इंपोर्टेंस दिया होछ ओके एंड सेटा हमें दीटा जिंस रे कहि परिबा जनरली एटा ଗୋଟେ जनरल पॉइंट कहूची जोटी भी वुमेन रिलेटेड इश्यू आपन पचरा हला विथ रेफरेंस टू ओडिसा सो हमर पंचायत लेवल रे ओके ग्रास रूट लेवल इलेक्शंस रे 50% रिजर्वेशंस रहउची जोटी की कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड रहउची आपनकर 1/3 राइट तो सेटा गोटे आपनकर बहुत बड़ चेंज अछि तापरे हमर इवन कोन हमर जो जॉब्स वरिका रहउची सेथरे भी वुमेन पाई रिजर्वेशंस रहउची जोटा की बहुत गुडे स्टेट्स रे सेमिति वुमेन को पे रिजर्वेशन ना ठीक अछि तापरे डिजास्टर रेजिलियंस तनु व्हेन द पीपल आर फिट ओके they can go and help in disaster management suppose गोटे
हठात कि गोटे छोट टाइप रो स्टॉर्म हो गला कोठी तो एनडीआरएफ को रीच करिया पे लेट्स से 1 डे लागुच ओके से जगह रे तो जदी ए लोक माने जो माने कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करी करे ओके दे आर हेल्दी एंड दे कैन गो एंड सपोर्ट ठीक अछि से माने प्रथमे सेठी रीच करी की हेल्प करी पारे राइट सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स तापरे आउ गोटे क्वेश्चन लास्ट 2 वर्ष हैला किबा 2 थरो हैला प्राय समस्त को पचरा होची सेटा हैला एनी काइंड ऑफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आउ केते केते जण को तो मल्टीपल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पचरा होची ओके सो जदि मते सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पचरा हैला सपोज इट एग्जांपल एतरे हमें आउ माने गोटे ओएस ऑफिसर से डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हे गला सेटा इंपोर्टेंट हो आपन को गोटे पर्टिकुलर पोजीशन रे यू आर इन अ पर्टिकुलर पोजीशन ओके तो सेम पोजीशन रे ए सिचुएशन आसी छी आपण केमति ताको ओके हैंडल करिवे yeah anyone if you have any doubts you can directly ask okay there is no need of raising hand you can directly ask your doubts हाँ सेटा आपनकर से ऐप रे ही मिल जिवो ऐप रे देखिबे डिफरेंट फोल्डर्स अछि फॉर एग्जांपल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस अछि सेटा गोटे फोल्डर अछि तो से फोल्डर रे आपनकर एई क्वेश्चन मिल जिवो करंट अफेयर्स फोल्डर अछि सेतरा ओडिसा इंटरनेशनल आउ नेशनल ओके तो से जो पीडीएफ हम जा डिस्कस करू सेठी मिल जिवो तापरे सेटा तो आज टाइम ने डिस्कस करिया पे काली मु डिस्कस करबी जोडा कि सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन लाइक हॉबी आपन को केमती हेल्प करूची तो से हॉबी गोटे फोल्डर अछि जोड़ा सब कॉमन हॉबीज अछि ओके फॉर एग्जांपल आपन हॉबीटा गार्डनिंग तो गार्डनिंग ऊपर कोन कोन क्वेश्चंस आसी पारे कुकिंग ऊपर कोन कोन क्वेश्चंस आसी पारे क्रिकेट बैडमिंटन फुटबॉल एमती 20-30 हॉबीज कॉमन हॉबीज जोड़ा सेडा रखाइस ता बाद जार हॉबीज जदी किछि गोटे स्पेसिफिक हॉबीज अछि ताले सेटा जतबेले फर्स्ट आपन मॉक इंटरव्यू देबे तो से टाइम में मोटले आपन डीएफ टा एनालाइज करबी सीआईएफ टा सेतबेले मु कहि देबी आउ कोन कोन करियर अछि राइट सो what is this question suppose you have been posted as district collector of a district in Odisha the district has recently been affected by a severe cyclone causing substantial property damage and displacement of people okay तो हमें तो एठी disaster management हमरो सबले दरकार because we are prone to cyclones floods etc additionally the district is already dealing with high levels of poverty and poor healthcare infrastructure तो अपना पाके हॉस्पिटल सेगुड़ा सब एते भलो नै which have been further strained due to the disaster as the district collector how would you manage this crisis situation and ensure the well being of affected people हला तो एटी कोन जो कीवर्ड्स उडा अछि सेटा केना ए टाइप रो क्वेश्चन सिमिलर टाइप रो बहुत गुडे क्वेश्चंस भी आसी पर एग्जैक्टली एटा ना ठीक अछि तो फर्स्ट हला सब बेले इमीडिएट रिस्पांस आपनकर कोन रहबो तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी हला टू सेव मैक्सिमम लाइफ ओके जितने लोगों को अपन बचाई पारे ठीक अछि सो से तरह एग्जांपल से दे चंदी to organize rescue operations to provide temporary shelters ensuring access to essential supplies such as food clean water and medical aid okay tapare medical assistance infrastructure repair and rehabilitation काहे ना due to okay the disaster आपनकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से गुडा अफेक्टेड हेतिबो तेणु क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आपण चेष्टा करी कि ताको जते जल्दी होबो ठीक करि पारे ओके तापरे लाइवलीहुड रेस्टोरेशन सो वंस ताकर टेम्परेरीली ताको आपण कोठी रखिले तापरे आपण को लॉन्ग टर्म भाबे पड़िबो ताको रिहैबिलिटेट करे पड़िबो तो लाइवलीहुड रेस्टोरेशन से माने आगु जो कामडा करथिले प्राय जति सेटा कंटिन्यू कर परिबे तो बहुत भलो अदरवाइज जति सेटा पॉसिबल हेलानी ताले ताको पई अलगा किछि व्यवस्था करिया पे पड़े ओके एग्जांपल सेठी देछि रिकॉग्नाइजिंग द हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी काना सेटा से ऑलरेडी कहिछि कि जगह पॉवर्टी बहुत अछि आई वुड स्ट्राइव टू रिस्टोर लाइवलीहुड्स एज क्विकली एज पॉसिबल दिस कुड बी डन थ्रू एम्प्लॉयमेंट इन रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन वर्क कैश फॉर वर्क प्रोग्राम्स और एक्सपेडिटेड इंश्योरेंस पेआउट्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर लॉसेस क्रॉप लॉसेस वेल कहला तो सेउडा अब रिसेंट दिन से अपन ऐड करि परिबे
एबे सेटा सैटेलाइट थ्रू होची आउ जाई कि ग्राउंड ओके रे फील्ड विजिट फिजिकल विजिट करके फिजिकल असेसमेंट दरकार नहीं एगुड़ा सब एबे जीआईएस थ्रू रे होची राइट देन कोलैबोरेशन एंड फंडिंग सो ऑब्वियसली बहुत पैसा दरकार पड़ियो सब गुड़ा गवर्नमेंट ओके बियर करबाटा मे नॉट बी पॉसिबल तेणु एनजीओ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो माने डोनेट करि पारि ओके सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन से करिकी फंड्स आनिकी तापर आपण ताको जेमती प्रॉपरली ताको मैनेज करिवे तार गोटे एग्जांपल दे परिवे कि जेते बेले हमर सुपर साइक्लोन हैला तापरे अंडर सीएसआर बहुत गुडे पीएसयूज आउ बड़ बड़ कंपनी जेमती कि टाटा गरिका हेले से माने हमर मल्टीपर्पस साइक्लोन शेल्टर्स गरिका पूरा कोस्टल एरियास रे बने देले तेणु एबे कोन होची ना जति फ्लडिंग हैला कि अलगा भी किछि डिजास्टर आसिला ओके ताले आपण ताको सेठी की शिफ्ट कर दोछुनी लोक और सेटा मल्टीपर्पस तो जेतले नॉर्मल टाइम रे सेटा क्लब हाउस भलिया कि गोटे रिक्रिएशन सेंटर भलिया स्कूल्स भलिया भी केते जगह रे सेटा यूज होछ ओके सो कोलैबोरेशन एंड फंडिंग देन लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस इफ इट कीप्स ऑन अकरिंग ताले लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस जेमति कि से द लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस रो बेस्ट वे हैला कि कम्युनिटी ओके एंगेजमेंट अपन करिवे कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट जोटी की कम्युनिटी के एजुकेट करा हबो तम फर्स्ट एड ट्रेनिंग दिया हबो कि एई टाइप रो जिंस होले अपन को इमीडिएटली या करिया बिकॉज़ द कम्युनिटी इज द फर्स्ट रिस्पोंडर गवर्नमेंट और एनडीआरएफ और एमएनएस को पहुंचिया भी टाइम लागो किंतु अपन को नेबर से प्रथम पहुंचो अपन पाखरे तनु ताको जदी फर्स्ट एड रो बेसिक नॉलेज अछि कि हां साइक्लोन बेले कोन करिवार अछि ओके जाका गोडो भांगला कोन करिवार अछि सो he can save a lot of lives right so community based disaster management then communication so clear or regular communication with public okay using information technology आजकल जते नुआ सब हमरा ओके और टेक्नोलॉजी अवेलेबल अछि ताकू भी आपण यूज करि परिबे तो कम्युनिकेट तार एग्जांपल आपण नै परिबे जो फ्लैश फ्लड्स हेतिला चेन्नई रे तो सेठी लोक माने इंडियन नेवी रो हेल्प नले ताकर चेन्नई पुलिस रो भी हेल्प नले थ्रू ट्विटर थ्रू फेसबुक कि मो लोकेशन है यार मो लास्ट 2 दिन है खाइबा पाइनी तो से माने एटलीस्ट जाई खाइबाटा पहुंचे दो राइट that we have also seen our government doing that is government of Odisha during the covid period एबे भी आपण सेटा देखि पाए राइट सो एटा हला गोटे सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत प्रकार रो हे परिबो एटा गोटे टाइप रो आज हम देखिलो ओके ताको टिके बुले की पकैले भी मोर और लेस द क्रक्स ऑफ द आंसर ओके would be the same तेणु आरो जो पॉइंट्स हुआ मने रखिबे तापरे आपण निजे आंसर दे परिबे आपको किछि आपको जस्ट बुझंतु ओके स्पॉन्टेनियस आंसर रो मैक्सिमम मार्क्स आपण को मिलिबो आपन हम घोषित देबार नहीं सो दैट कि हमें किछि गोटे मेमोराइज करिकि रिप्रोड्यूस करू ओके बुझि पाल so we'll stop here anyone having any doubts then you can ask me tomorrow we will go to some questions from your hobbies and other questions from biodata both गुडे if you are having जो माने biodata analysis में पटे नांती you can fill it up and send it otherwise first जो interview अपना मॉक हबो तो सेतरे मु एनालाइज कर देबी जो माने ऑनलाइन देबे कि जो माने आसी की क्लास रे ओके ऑफलाइन देबे कथाटा हला आपनकर ऑफलाइन पे वन डे आगु शेड्यूल करिवे आउ सेतरे आई विल गिव यू द एग्जैक्ट टाइम स्लॉट so you come in the same particular time रे आसी कि आपण ओके मौका दे परियो किंतु किछि प्रिपरेशन होला पर as I told you in last class कि आपण every day mirror interview at least 2 to 3 hours दियो गोटे मिरर रे चारिटा क्रॉस कर देबे label them 1 2 3 4 so consider that they are the eyes of the 4 interviewers ठीक अछि आउ जो important question रो pdf रा दिया हिची आपण ऐप रे तो से क्वेश्चन रो कोन आंसर आपन को पई हे पारे मॉडल आंसर जो उडा दोची सेटा तो बहुत गुडे जिंस दोची व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस सर्विस तो हमरो 7टा 8टा पॉइंट देला सेटा एक्चुअली कहि होबर ना एग्जाम माने एक्चुअल इंटरव्यू रे तो आपण 3-4टा पॉइंट देबे निजरो भी जदी आउ किछि अलगा रीजन अछि ऐड करिवे टू गिव ए पर्सनल टच टू योर आंसर तो सेमिति यू मेक 50-60 क्वेश्चन लिस्ट ऑफ 50-60 क्वेश्चन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ रे सेमिति 60टा क्वेश्चन देछि जोडा कि प्राय पढिबार बहुत संभावना अछि तो ताकू आपण लेट्स से डिवाइड इट इनटू सेट्स ऑफ 15 or 20 क्वेश्चंस एंड एवरी डे आपण एटलीस्ट
40 minutes रो इंटरव्यू देबे मिरर इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू रो टाइमिंग 20 to 30 मिनिट्स भितर वेरी करिवो बट जदि वो 40 मिनिट्स रो इंटरव्यू दउची ताले इजीली ओके मु से 20 मिनिट्स रो इंटरव्यू कि 30 मिनिट्स रो इंटरव्यू दे पर राइट तापरे आउ गोटे इंपोर्टेंट कंपोनेंट आपनकर इंटरव्यू रो हला स्ट्रेस कंपोनेंट जो स्ट्रेस इंटरव्यू हम सेटा आपण केमते हैंडल करछो okay so those things we will see in the जो mock interviews ना देखिए right so we'll stop here unless you have any doubts you can ask else we will stop here sorry कौन कहले हाँ अपन टिके येटा कम अछि वॉइस टा टिके अपन वॉल्यूम टा बढ़े थे हाँ ठीक अछि कोन yes सुगा जाउची कोन तो what is your doubt ऑप्शनल टा देखंतु एते कम टाइम अछि आपण तो ऑप्शनल टा मेंस भलिया पढी परिबेनी ओके तारो जस्ट टर्म्स गुड़ा जहाँ अच्छी सिलेबस रे आपण को सेटा आसीबा दरकार ठीक अछि तो केबे केते पिलांकर ऑप्शनल टोटली पचरा होवेनी केते पिलांकर एंटायर इंटरव्यू खाली ऑप्शनल ऊपर ही जाय ओके सो वी कैन नेवर प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द इंटरव्यू ऑप्शनल रो बेसिक्स जेति की टाइम आपण हाथ रे अछि ओके सेटा आपण ट्राई करंतु ताको ठीक करिया पे ओके जा बेसिक जिंसटा बिकॉज़ एंटायर ऑप्शनल तो आपण टच करि परिबेनी ओके इतने कम टाइम fine so we'll stop here then okay and tomorrow we will continue